तीन तरीके के नंबर ही हैं और उनमें से भी हमने दो को करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया. समवेयर इट्स कॉल्ड डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम. Hello guys, welcome back. So today we are going to solve another very famous problem of two pointers approach. और ये बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है इन कंपनीज लाइक मेटा, गूगल, अमेजन, एडोबी. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी फेमस क्वेश्चन एज वेल. इस क्वेश्चन के बहुत से नाम भी हैं लाइक समवेयर इट्स कॉल्ड डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम. समटाइम्स वी कॉल इट एज शॉर्ट कलर्स एंड सो ऑन. सो बेसिकली इट्स लाइक अ शॉर्ट इन टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड जिसमें क्या हुआ कि आपको पास एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं एंड वो एलिमेंट्स तीन तरीके के हैं लाइक इट कैन बी 0, 1, 2. सो वी कैन डोनेट देम जस्ट लाइक रेड कलर बॉल और वाइट कलर और ब्लू कलर. सो let's see what the question is and how we can solve this. What's the optimal way, what's the brute force way? So let's discuss about this question. So if you see on my screen, I have one problem with me. As we can see, I have three colors with me: red, blue, green. 0 denotes the red one, 1 denotes the white, and 2 denotes the blue. And what you have to do is basically we have to sort the array. So if we see the example, we have 2, 0. Let me write the indexes. So we have 2, 0, 2, 1, 0. What we have to do? We have to sort this. So output will be like 0, 0, 1, 1, 2, and 2. So how can we solve this and what's the most optimal way? First, understood the question. Yes, we have given three types of number in the array that can be either 0 या 1 होगा या 2 होगा, and we have to make them sorted in ascending order. So looking like ये तो बहुत simple सा question है. Just do one thing, do array dot sort. Sorting कर दो, हो गया. Like array dot sort and it's done. That's it? No, that's not the case, because in case of sorting, what will be the time complexity? Even if we consider the best algorithm of sorting, in that case even it will be n log base n. Yes, even if we consider the best sorting algorithm, हमें उस केस में भी इसका time complexity order of n log n मिलेगा. Now the interviewer might ask you, can we optimize this? Can we bring this time complexity to big O of n? Can we do this? Yes, we can. But how? So, with the help of two pointers, I am going to solve this problem and see how it can be further optimized from n log n to big O of n. Let's see how it works. So, I am writing the array here again. So, the array is 202, 2, 0, 2, 1, 1, 0. So let's try to build the intuition. Let's try to build the intuition. How can we use two pointers to sort the array? In order, at last we have to sort it. We have to make it look like it's a sorted array. So how can we do this? Let's try to build the intuition behind the question. कि हमारे पास तीन तरह के नंबर हैं. ओके, सो समहाउ अगर हम किसी भी दो को उनके करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दें तो क्या तीसरा भी अपने करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा? That can be the case. Is it so? How? Let's say if I somehow manage to able to put all zeros in the very starting, let's say, and all the twos at the end, let's say, okay. So क्या 1 जो बच गया है वो अपने आप अपने करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा? यस, इट्स वेरी ऑब्वियस, बिकॉज वी हैव ओनली थ्री टाइप्स ऑफ नंबर. तीन तरीके के नंबर ही हैं और उनमें से भी हमने दो को करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया. दैट मीन्स हमारे सारे एलिमेंट्स अपने आप करेक्ट पोजीशन पे प्लेस हो गए. सो लेट्स सी हाउ, कैसे विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंटर्स
are we going to short this array? So now let's say I have one pointer. I'm writing here it again: 2, 0, 2, 1, 1, 0. Okay, I have one pointer here, that is, let's say call it 1. I have one pointer here, let's call it 2, or let's make some better names. Let's call it start, let's call it end. Now I'll have one more pointer with me. I will have one more pointer with me, which will help me to tell which pointer should I increase or decrease. So that is the intuition we have to find from this question कि मेरे पास एक पॉइंटर और होगा, लेट्स से मिड. ये मिड ये बताएगा कि हमें ये सही जगह पे प्लेस है या नहीं, या ये सही जगह पर प्लेस है या नहीं. कैसे? Initially, what I'm going to do is I'll initialize my start at the beginning, my mid will be at the beginning too, and my end will be at the last position. So this is at 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so my end will be at 5. Now, now let's see how these pointers are moving and walking. So what I'm going to do if I encountered, let's say I'll be iterating with my mid. मैं अपने mid को use करूँगा for the iteration, and I'll see how this mid is actually helping me in moving my pointers. So my mid is at this position, that is 0, which is 2. So what I'm going to do, अगर मुझे mid 0 पे है and I encountered with 2, what should I do? What should I do? अगर मेरा mid 2 मिला तो मुझे क्या करना चाहिए? हमारे पास दो पॉइंटर है, स्टार्ट और एंड. स्टार्ट ये मेक श्योर करेगा कि 0 सही जगह पर प्लेस हो गया, एंड ये मेक श्योर करेगा कि हमारा 2 करेक्ट पोजीशन पे प्लेस हो गया. सो इनडायरेक्टली वी विल बी प्लेसिंग 1 एट द राइट पोजीशन एज वेल. सो नाउ इफ वी encountered with 2, can't we just replace or swap with the position of end, which is 2? So it will make sure कि 2 अपने end position पे पहुंच गया. So if I say if mid a of mid is equals to 2, if I simply swap a of mid and a of end, अगर स्वैप कर दूं तो मैंने ये मेक श्योर कर लिया कि नाउ माई 2 इज एट इट्स करेक्ट पोजिशन, और मैं एंड को डिक्रीज कर देता हूं. मेक सेंस कि मैंने 2, मुझे मेरे मिड को 2 मिला, मैंने 2 को लास्ट में प्लेस किया और एंड को नीचे कर दिया, एक स्टेप बैक कर दिया. दैट मीन्स 2 अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस हो गया. सो वी हैंडल द केस अगर मेरे मिड को 2 मिलता है. व्हाट इफ माय मिड encounters with, if my a of mid encounters with 1, now what will happen? Now what will happen? We have to do nothing, we will just increase our mid, because 1 के साथ हमें कुछ नहीं करना, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा 0 और 2 अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो इफ यू गॉट 1, do nothing, just mid plus plus. Make sense? Now comes the part 0. If our a of mid encounters with 0, what are you going to do? It's very simple. We can simply just swap with the 1 with the start point. That's how we did with the end. What I'm trying to say is कि जैसे हमने एंड के केस में क्या किया कि हमें 2 मिला, हमने इसको एंड से रिप्लेस कर दिया. दैट मीन्स कि हमने ये मेक श्योर किया कि हमारा 2 अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया और हमने एंड को डिक्रीमेंट कर दिया. कांट वी जस्ट डू द सेम विद दिस 1 एज वेल? इफ हमारा a ऑफ मिड को 1 0 मिला, सो जस्ट स्वैप इट with a mid with a start. Cool. जब स्वैप कर दिया दैट मीन्स 0 अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया, तो नाउ वी कैन इंक्रीमेंट द स्टार्ट. Cool. Since
our a mid was initially placed at the initial position, so we have to increment the mid as well. So mid भी हम इसको आगे बढ़ा देंगे, and that's it, the code is solved. So with two pointers, we were able to solve this problem. Let's see how it works. Let's see how this is working in the real case. So I'm going to do this here. So what my example? It was 202, 202, and 110, 110. So this is my start position, okay, and this is my end. This is my mid. Yes. So my mid got 2. What should I do? Swap it with end. Swap it विथ एंड. एंड में आ गया 2, यहाँ आ गया 0. ठीक है, फिर क्या होगा? अब एंड कहाँ जाएगा? अब एंड सॉरी अब एंड आ जाएगा यहाँ पे. कूल. नाउ माई मिड अगेन गॉट 0. what I'm going to do is swap it with start to swap करेंगे तो it will be remain the same position because start और mid same position पे है, and start and mid दोनों आगे बढ़ जाएगा. So in that case I'm going to increment both of these pointers. अब start भी यहाँ आ गया, mid भी यहाँ आ गया. Cool. Now again my mid got 0. What I'm going to do is again swap it with the start. तो इससे इसको इसी पोजीशन में swap करेंगे and again both will increment. So now I'm going to increment my both pointers. Now my start is here and my mid is here again. Now my mid got 2. What I'm going to do is swap it with end. तो 2 और 1 को swap करेंगे so it will become, ये हो जाएगा 2 and ये हो जाएगा 1, and my mid will remain at the same position and my end will decrement to 1. Now mid is less than equal to end. Do we need to swap? So this is how we can conclude our base case कि if mid less than equals to end till, let's say make it while mid is less than equal to end, we can continue our operation. So if we write the whole code, it will be like if a of mid equals to 0, I am going to swap a mid, a start, and I am going to do mid plus plus and start plus plus. Cool. Now else if I got my a mid as 1, I'll do simple mid plus plus, and now I got 2. Again swap a of mid with a of end and decrement the end pointer. So as we have seen how with the help of two pointers we can solve this problem, and what will be the time complexity. So as we are doing only one iteration, we are just iterating over the loop only once. With the help of two pointers, we can say this problem can be solved to big O of n, and space complexity is constant because we are using nothing extra memory. So yeah, that's how we can solve this problem with the help of two pointers. So I hope you liked it, and yeah, thank you for joining.